Good morning all. भाई किधर गए? See, this is no, we are in the phase of revision. ठीक है? तो जो भी classes नहीं किए हैं previously, this is a golden opportunity for them to actually do a quick revision. Now this will be very helpful to you. ठीक है? Good morning, good morning, good morning. ठीक है? ना ये revision का मौका मिल रहा है, इसे छोड़िए मत. Don't lose this opportunity. रिवीजन क्विक रिवीजन करने से आपकी चीजें जो है वो फिर से फ्लैशबैक में आ जाएंगी. सो यू विल बी अपडेटेड. ठीक है ना? आप मान लो एक चैप्टर को रिवाइज करने में पूरा दिन लगा दोगे, बट हियर व्हाट विल हैपन इन से अ स्पैन ऑफ 1 hour 1.5 hours वी विल रिवाइज द होल चैप्टर एंड चीजें आपको याद रह जाएंगी. So therefore, I insist on all attending these classes. The very important. Sir, कुछ selection दे दो. See, okay, Sabita. See, I do not believe in selections. क्यों? See, simple thing is, अगर मेरी पढ़ाई complete है, fine, then I don't need selections. Because सब आता है. कहीं से भी कुछ भी पूछ लो भाई. Fine. And as far as NEET and other competitive exams are concerned, उसके लिए we will be giving you probable questions, yes, जो कि most tentatively आने के chances रहते हैं, तो वो questions आपको करवाएंगे. Fine. That we have already planned. We will do those questions in the form of assignments, tests, quiz. We will be doing it. ठीक है? तो वो इसी revision में add हो जाएगा. So don't be worried about it. And as far as आपके +2 का concern है, तो probable questions जो है selection वाले वो हम नहीं दे सकते. Why? Because we are not teaching for the purpose of +2 board exams actually. ठीक है? And वो subjective है. ये NEET वगैरह के लिए है, which is more of an comprehensive or objective type. ठीक है ना? But yes, अगर आप revision में participate करोगे तो automatically चीजें आपकी clear हो जाएंगी. So you don't need selections. मान लो selection दिया, वो selection नहीं आया तो that's a bad thing ना. ठीक है? फाइन. सो प्रिपरेशन ऐसे कीजिए ताकि सिलेक्शन की जरूरत ना पड़े. चलो ठीक है, लेट्स बिगिन देन. फाइन. टुडे विल बी रिवाइजिंग 2 चैप्टर्स. एक इवोल्यूशन है, दूसरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है. फाइन. सो विल बी टेकिंग लुकिंग इनटू both of these chapters and looking at the core concepts of them. एक चीज बताइएगा, wherever you have any queries or concerns कहीं पे भी, तो आप फटाफट उसे पूछ लीजिए. Right? And since we have to revise 2 chapters, so I'll be moving quickly through them. तो कहीं पे कोई भी issue आए, doubt आए, तो फटाफट पूछो. Fine? Do not be shy to ask questions. Okay. ठीक है. So let's begin that. Basically, first of all, ये evolution क्या है? What exactly is evolution? ठीक है? Let's look at it. Evolution is an orderly change from one form to another. ठीक है? Now, once you see the origin of life, जब पहले organisms बने थे, the first organisms was of the primitive type, that is the protobands. Then came the archaebacterial forms, then the eubacterial forms, and then the photosynthetics, and so on. Now, this gradual increase in the sophistication or complexity over the span of time is referred to as evolution. The gradual change in the sophistication or complexity of organisms is referred to as evolution. Okay? So evolutionary biology is the study of history of the forms on Earth. Fine. Now, the first topic in this regard is origin of life. Look into it. The most important theory that concerns with the origin of life is the Big Bang theory.
The Big Bang theory states that universe originated about 20 billion years ago by a singular huge explosion of a cloud of dust and gases, which resulted in the formation of this universe. Okay? Okay. The Earth was formed approximately 4.5 billion years ago. There was no atmosphere on the Earth जब ये formation हुआ. Water vapors, methane, carbon dioxide, ammonia released from molten mass covered the surface. Now, what is missing here? Oxygen नहीं है भाई. So the primitive, question पूछी जाती है. What was absent in the primitive Earth, or which of these were absent in the primitive Earth? The answer is oxygen. ठीक है. Then the ultraviolet rays from the sun broke up the water into molecular hydrogen and oxygen, H2 and O2. Okay. Now this oxygen combined with ammonia, methane to form water, carbon dioxide, and other forms of oxidative products. Okay. The ozone layer form हुआ. Now we know that ozone layer जो है वो O3 है. Ozone layer is O3. ठीक है. O3. Fine. It's not O2. Remember this. तो ओजोन जो है वो आप इनहेल नहीं कर सकते. It cannot be taken up. Fine. As it cooled, the water vapor fell as rain to form oceans. Yes. ठीक है. क्यों? Water evaporate हो गया. Condensation की वजह से clouds etc. came into picture, and then it rained continuously for thousands of years, resulted in formation of these oceans. ठीक है. Life appeared on Earth almost 4 billion years ago. The first life that came on Earth was approximately 4 billion years ago. ठीक है. तो आपकी the Earth was formed in 4.5 billion years ago, but the life came on Earth approximately 4 billion years ago. That is approximately 0.5 billion or 500 million years later. तो imagine कीजिए पहली लाइफ फॉर्मेशन होने में it took 500 million years. ठीक है. It's not a simple thing. Fine. Okay. Next, the various theories for the origin of life जो है वो क्या है देखो. पहली abiogenesis theory और theory of abiogenesis. ठीक है. इस abiogenesis के बाद next came the theory of biogenesis, then the theory of panspermia, theory of creationism, theory of chemical evolution. Important, remember these. पहला theory of abiogenesis, theory of abiogenesis. ठीक है. ये चीजें हैं क्या? We'll look into the thing. Once we continue, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये है क्या. So first was theory of abiogenesis, then came the theory of biogenesis, theory of panspermia, theory of creationism, and theory of chemical evolution. ठीक है. All these are various theories associated with origin of life on Earth. सब explain करते हैं अपने अपने हिसाब से. How did the first life came upon Earth? Okay, fine. So once more, theory of abiogenesis, theory of biogenesis, theory of panspermia, theory of special creation, and lastly, theory of chemical evolution. These theories are the evolutionary theories for origin of life on Earth. Okay. याद रह गए? Yes. Now, theory of spontaneous generation, also known as the abiogenesis theory, वो क्या है ध्यान दो. Now, people have this wrong conception कि abiogenesis मतलब abiotic components को मिला के जो theory जो
लाइफ आ गया, वो है अबायोजेनेसिस. नो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो हम केमिकल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन अबायोजेनेसिस थ्योरी जो है, दैट वाज गिवन इन अ डिफरेंट एंगल. ठीक है, वो द ओरिजिनल वन वो क्या था? It states that life came out of decaying and rotting matter like straw and mud. ठीक है, तो straw and mud जो है, जो कि innate matter है, ठीक है, it's dead mostly, decaying mostly. इनके decomposition से life came, like maggots, ठीक है, earthworms, fine, larval forms, ये सब. But this was incorrect. क्यों? यहाँ पे ध्यान दो. Spontaneous generation or abiogenesis theory was proven wrong. किन्होंने prove किया? Louis Pasteur ने prove किया. So Louis Pasteur was the person who actually dismissed the theory of abiogenesis. इन्होंने क्या कहा? He demonstrated that life came on earth from pre-existing life forms. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बट एक क्वेश्चन kept lingering. क्वेश्चन नो लिंगरिंग रह गया. क्या रह गया? कि पहली लाइफ जो थी, द फर्स्ट लाइफ दैट केम, वो कहां से आई? मींस बिफोर दैट देयर वाज नो लाइफ, एंड देन देयर केम द फर्स्ट लाइफ. ठीक है, अगर लाइफ केम ऑन द अर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहां से आई? राइट. तो दैट थियरी, ऑल्दो ये इस थियरी ने, लुइस पैस्चर की इस एक्सपेरिमेंट ने, it demonstrated the abiogenesis theory to be incorrect, but still it was not able to answer the question of how the first life came. ठीक है, fine. So how did he display it? इसको हम लोग एक फेमस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो फेमस एक्सपेरिमेंट इज, क्या है ये एक्सपेरिमेंट? यस, Pasteur's swan neck फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. पैश्चर की स्वान नेक फ्लास्क जो थी, यूजिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ही प्रूव्ड इट. क्या किया ना, देखो. ही शोड दैट लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम killed yeast in a closed pre-sterilized flask, but in an open flask like microbes appeared. तो इन्होंने यहां पे देखो, दिस इज अ स्वान नेक फ्लास्क. ठीक है, इन्होंने इसको स्टेरिलाइज किया बाय बॉइलिंग. अब बॉइलिंग करने के बाद देयर इज नो ग्रोथ एट ऑल. व्हाई? बिकॉज ऑल आर डेड. तो जब डेड हो गए सब के सब, तो इस कल्चर मीडियम में देयर इज नो ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रोब्स. ठीक है, लेकिन जब इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, बॉइल करके छोड़ दिया. ठीक है, एंड ब्रोक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वान नेक इनटू अ नॉर्मल फ्लास्क, डिटैच द स्वान नेक एंड फॉर्म द नॉर्मल फ्लास्क. अब इसमें क्या हो गया, since it was open and the transition was smoother, तो यहाँ पे microbial growth दिखने लगा. Fine. So this showed that if we keep it in the normal way after sterilization, once they are killed, तो उसमें और growth नहीं होगी, या फिर no developments will occur. लेकिन if we expose it, then microbial growth is there. ठीक है, so in that way he proved it. Okay. फिर देखो, नेक्स्ट थियरी वाज द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस. ठीक है, ये इज हु गेव दिस? पहले तो लुइस पैस्चर ने दिया भाई, बिकॉज ही गेव दिस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट. यूजिंग द स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, he proved the abiogenesis theory. ठीक है, and this proved of the abiogenesis theory. Now what happened here? Francisco Redi, Spallanzani and Louis Pasteur, they together proposed the theory of biogenesis.
According to it, life originates from pre-existing life. जैसे आपने सेल में पढ़ा, omnis cellula, e cellula, that new cells are formed from pre-existing cells. वैसे ही that is, that was given by Rudolf Virchow. If you remember properly, first year में पढ़ा होगा 11th में. The same concept is applicable here also. It says that the life that appeared next, the original, no, जो life appear हुई on earth, वो life पहले exist करती थी, and from the pre-existing life, the or organisms, new organisms were formed. ठीक है? But same thing रह गया. Does not explain the origin of the first life. तो पहली लाइफ कहां से आई वो नहीं बता पाया. ठीक है? Although experiment थे and they were performed by famous scientists Balanzani, Francisco Reddy, and Louis Pasteur, hence biogenesis theory. Okay. Then third is the cosmic theory of the theory of the panspermia. ये बोलता है that life did not originate on Earth on its own. So from any other part of the universe, ठीक है, certain extraterrestrial particles, spore-like particles, came on Earth through the meteors and asteroids, etc. ठीक है, and from them the life originated. ठीक है, देखो, says that the units of life, that is spores, were transferred to different planets, including Earth. ठीक है, so from different parts of the universe, asteroids and meteors came and landed on the Earth, and from those spores life originated. ठीक है, then देखो, theory of the special creation or the special creation theory. ये क्या बोलता है that every, ये थोड़ा mythological है, जैसे हमारी evolution, हमारे mythology में, in human mythology, हिंदू mythology जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदू mythology में अलग concept है, Greek mythology में अलग concept है, Christian में अलग है. Okay, all have different theories associated with it. अब ये क्या बोलता है? It says that living and non-living were created by a supernatural power, that is God. ठीक है, like in case of the Hindu mythology, we have the Manu, ठीक है, and in case of the Christian mythology, we have Adam and Eve, ठीक है, and in case of the Nord mythology or the Greek mythology, we have other gods and goddesses, right? Like we have the Zeus, ठीक है, we have the Poseidon, the, for water and sea, वगैरह वगैरह. So different kinds of concepts are there that actually, explain the supernatural theory. Then this particular last theory, that is theory of chemical evolution. Theory of chemical evolution. ये आपकी scientific theory है जिसको appreciate किया जाता है. This is the theory which is actually appreciated. ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें. ये very important है जो कि actually explain करती है कि how did life came upon earth. How did life come upon earth? This is the most feasible and scientifically proven theory that life on earth कैसे और कहां से आई. ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे. This was proposed by Oparin and Haldane. ठीक है, Oparin and Haldane. JBS Haldane, AI Oparin. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? The first form of life was originated from non-living organism. I mean non-living, inorganic and organic molecules. तो क्या है इसकी कॉन्सेप्ट, ध्यान दो. See, for instance, सबसे पहले we have atoms. ठीक है ना, atoms living non-living कुछ नहीं होते. ठीक है, atoms are simply base elements, तो ये non-living ही होते हैं. Atoms cannot be living. ठीक है, अब ये atoms जो है ये जब मिल गए तो इनको मिलने से क्या बने भाई?
मॉलिक्यूल्स। कौन से प्रकार के मॉलिक्यूल्स? बोथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों प्रकार की मॉलिक्यूल्स बनी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फाइन। ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये बन गए। कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, आरएनएस, डीएनएस, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। फाइन। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएंगे? अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये सब इनऑर्गेनिक है। फॉस्फेट्स आ गए, सल्फेट्स आ गए, कार्बोनेट्स आ गए, बाइकार्बोनेट्स आ गए, ये सब आपकी क्लोराइड्स आ गई। दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ by certain forms of reactions between these organic and inorganic molecules, interaction होने की वजह से there was a certain set of reactions because of which जो लाइफ पहले अपीयर, ठीक है, ध्यान दो इस पे। So methane, ammonia, carbon, water, sugars, proteins, nucleic acid, etc. ये इन्हीं की कॉम्बिनेशन से पहले अपीयर हुई। So basically पहले अबायोजेनेसिस हुई थी, फिर बायोजेनेसिस हुई। सो केमिकल इवोल्यूशन भी एक फॉर्म ऑफ अबायोजेनेसिस ही है, बट वो अबायोजेनेसिस थियरी नहीं है। द मैकेनिज्म इज अबायोजेनेसिस। व्हाई? बिकॉज केमिकल एंटिटीज joined or interacted together to result in formation of these molecules. But this is not the abiogenesis theory. अबायोजेनेसिस थियरी अलग है, जो कि वहां पे फर्स्ट में आपने देखा था, ठीक है, वेयर डिकेइंग मैटर से लाइफ केम। फाइन। तो क्या बोलती है केमिकल इवोल्यूशन थियरी? इट सेज दैट द लाइफ केम अपॉन अर्थ थ्रू द केमिकल इंटरैक्शंस, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, and then from those first life forms the evolution occurred and the new life forms or the sophisticated complex life forms were formed. ठीक है, I hope you would have understood this. इस चीज को प्रूव करने के लिए there were experiments also conducted, ठीक है, that we'll see now. Now to prove the concept of the chemical evolution, Harold C. Urey and Stanley Miller, they performed this Urey-Miller experiment, ठीक है, as you can see. तो इन्होंने क्या किया? They recreated the conditions that existed during the formation of life on the primitive Earth. ठीक है, तो अर्थ पे उस समय किस प्रकार की सिचुएशन थी, वेदर कंडीशंस थे, टेम्परेचर थे, पीएच था, all those things were recreated on a small scale inside the lab. And उन substances को जो वहां पे present थे, those substances were chemically interacted. Yes, look into this. Harold C. Urey and Stanley Miller experimentally proved theory of chemical evolution. They created a condition like that of primitive Earth, जिसमें high temperature था, volcanic storms थे, reducing atmosphere tha, then there were plenty of ions in the atmosphere. Fine. And the chemicals which were present were methane, ammonia, carbon dioxide, water, hydrogen, etc. Except oxygen, बाकी सब चीजें उन्होंने रख ली। ठीक है, तो यहां देख लो भाई, बॉइलिंग है अप्रोक्सीमेटली 800-900 डिग्री सेल्सियस पे, देन वाटर वेपर्स है, ठीक है, वाटर वेपर्स है। फाइन। तो मीथेन आ गया, अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, एंड इन बॉइलिंग वाटर यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्पैच भी की बिकॉज देयर वर कंटिन्यूअस वायनिक वेरी वायलेंट स्टॉर्म्स, ठीक है, जिसमें आयन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा था ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडर। सो इलेक्ट्रोड्स रेप्लिकेटेड इट, तो स्पार्क भी डिस्चार्ज किया इन्होंने। नाउ हीट है, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग है, नाउ बोथ ऑफ दीज कंबाइंड टुगेदर, ये जो यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, एटसेट्रा,
ये भी combine कर गए. They combined. Now look into this. They made electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia, hydrogen, and water vapors at approximately 800 degrees Celsius. Okay. As a result, some amino acids are formed. Okay. In similar experiments, others observed formation of various things like carbohydrates, that is sugars, nitrogen bases, adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil, fine. And then we had pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, phycoerythrin, fucoxanthin, pheophytin, phycocyanin, etc. Fine. तो कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स मिल गई, फैट्स एंड लिपिड्स मिल गए, पिगमेंट्स मिल गए, आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए. तो these are all present in today's modern organisms. ठीक है. So therefore now we have proven in experimentally that the chemical evolution theory of origin of life is the most appropriate form of explanation that how the first life came upon earth. ठीक है. And since इसमें नॉन लिविंग चीजें ही पार्टिसिपेट कर रही थी, so this is also a form of abiogenesis. बट ये abiogenesis theory नहीं है, ये chemical evolution theory है. Abiogenesis theory is a historical account. ठीक है. The mechanism is abiogenesis, but the theory is not abiogenesis. So अगर मान लो आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन थियरी ऑफ abiogenesis के बारे में पूछता है, तो वो आपकी dead and decaying matter से when the living entities came into existence वो है. ठीक है. But is abiogenesis applicable here also? Yes, it is, but not in terms of theory, but in terms of actual mechanism. ठीक है. So don't be confused with it. दोनों चीजों को एक साथ कंफ्यूज मत करना. ठीक है. तो आफ्टर द केमिकल मैकेनिज्म हमने मॉलिक्यूल्स तो बना लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, आरएनए, डीएनए. ठीक है. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बना ली. ठीक है. और दे हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड. अब वो लोग कैसे जुड़ते हैं आपस में वो देखो. The first non-cellular forms of life originated about 3 billion years ago. So पहली लाइफ जो फॉर्म हुई थी, they were known as the कौन सी non-cellular forms, non-cellular forms, or we can say acellular forms, जिनमें एक्चुअली सेल वाली कॉम्पोजिशन नहीं थी. So therefore, these were referred to as the protobionts. The protobionts. ठीक है. And the molecules were either coacervates, microspheres, appeared in the form of micelles. जो आपको ये फिगर में दिख रहा है, these are all micelles और chylomicrons और microspheres. ठीक है. तो ये जो बाद में चल के these only will develop into cellular structures. but अभी यहाँ पे देखो molecules like RNA, DNA present है. They are surrounded by molecules of lipids or fats and certain proteins. ठीक है. धीरे धीरे करके this would start or gain the ability to multiply. And this particular structure which is enclosing it, ये lipoproteinaceous membrane बन जाएगा, जो आपने modern day cell theory में the fluid mosaic model पढ़ा होगा cell membrane का, या फिर unit membrane model you would have studied by Robertson. ठीक है. Daniel Davidson, fine. That is the sandwich model. तो ये same चीज है, but initially ये acellular है. क्यों? इसमें ना cytoplasm है, ना कि membrane bound है. Hence it is not exactly a cell. ठीक है. Appearance cell जैसा है, but cell नहीं है. Okay. They were self-replicating metabolic capsules. जो ये बन गए, इनको हमने क्या नाम दिया है? Protobionts दिया या coacervates बोलते हैं. Protobionts or coacervates. Remember the term. Either you can call them protobionts or you can call them coacervates. ठीक है. Okay. Fine.
फाइन। तो ये हो गई आपकी थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। नाउ डज एनीवन हैव एनी डाउट्स इन द थियरी ऑफ इवोल्यूशन? देखिए, जब भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, when you are having a class, I would insist on one thing, please. Have your NCERT books in front of you. अपनी NCERT की किताबें जो है अपने सामने खुले रखो, and as we are moving through these audio visuals and the classes, तो आप उस समय आपकी NCERT को सामने रखा करो, क्विकली स्क्रिबल थ्रू इट, wherever you have any doubts or queries, आप इमीडिएटली पूछिए, तो उससे आपकी बुक की कंटेंट भी रिवाइज हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देख के आपको क्लैरिटी आ जाएगी, सो थिंग्स विल साइमल्टेनियसली बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो जो भी आपको नहीं समझ में आता है, वट एवर क्वेश्चन यू हैव, यू मे आस्क। ठीक है, आफ्टर एवरी पर्टिकुलर फेज हम लोग 1 या 2 मिनट का पॉज लेंगे। In that 1 or 2 minutes, you are free to ask any questions as doubts you have. Fine. That's very very important. Doubt clear कराना very important है। ठीक है, जिसको जो डाउट आए पूछो। I give you 1 to 2 minutes for that part. Okay, fine. So I hope everyone is clear. Now, ये जो चीजें हैं, these no happenings for the creation of earth हो गया, evolution हो गया, these have started millions and millions of years ago. ठीक है, जब हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब इंटायर ह्यूमन काइंड, मैन काइंड वही पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, वी आर वेरी व्हाट यू कैन से अर्ली क्रिएचर्स नाउ। ठीक है, जो अभी रिसेंटली हुए, इफ यू लुक एट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, द ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक द यंगेस्ट ऑफ देम। ठीक है, सो देन क्वेश्चन अराइजेस कि हमको इतनी सारी जानकारी कैसे हो गई? How did we come across these concepts, these ideas? ये आई कहाँ से? Right? Now these things must not only be theories. There must be some actual proof. तो ये जो proof है that actually provide us solidarity कि ये चीजें हुई कैसे हैं, these are referred to as evidences in evolution. तो वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंसेस है, जैसे मान लीजिए खुदाई, यू नो एक्सकैवेटेड एंड अनअर्थ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डेड रिमेन्स। ठीक है, अब उसकी जब आपने कार्बन डेटिंग की, तो यू फाउंड आउट दैट दैट पर्टिकुलर एक्सकैवेशन dated back approximately 10,000 20,000 years ago, right, and has remained preserved in the sedimentary rocks, ठीक है, or the metamorphic rocks. Therefore, from that we can get the idea कि ये चीज कितनी पुरानी है, what were the kind of atmospheric conditions in that particular period, ये जो organisms, या फिर ये भी ये जो excavation हुआ है उसमें जो भी content है, how important was it to maintain the evolutionary phases? ठीक है, वो सब चीजें आपकी क्या है, एविडेंसेस है। सो लेट अस एनलिस्ट व्हाट आर द एविडेंसेस, लेट्स सी। तो सबसे पहली एविडेंसेस जो है वो है पैलियोंटोलॉजिक एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस माने फॉसिल्स एटसेट्रा। ठीक है, फिर आए मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ये चीजें क्या है, सर्टेन थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म and certain things which were present in the ancestors, now they are missing. ये आपकी क्या है, morphological evidences है। Then biogeographical, मतलब according to the changes in the geography, ठीक है, there might be differences in the organisms, तो ये भी एक evolution का symbol है। Then comes biochemical evidence. According to the biochemicals, like the RNA, mRNA, cytoplasmic content, etc., जो अभी है currently, वो पहले same organism में कैसी थी? By understanding that way, we can clear the
certain logically, what we can say, prove the ideas that how evolution came. Then embryological evidences. If you look at the embryos after fertilization and the development from the zygote, ठीक है, वो आपकी एम्ब्रायो होती है. So पहले fertilization हो गया and then came the zygote. Zygote of forest stage को हमें embryo बोलता हूँ. Okay. Now this embryo undergoes certain changes. Now these changes are the ones that help us in understanding कि fetal stage रे how were the आपकी evolution considerable. The last one is evidences for evolution by natural selection. Means suppose some organism exists in the current environment and उसमें थोड़ी environmental changes होने लगी. Now those organisms that will be able to adapt to those changing conditions वो survive करेंगी. जो नहीं कर पाएंगी adapt वो extinct हो जाएंगी या फिर what we can say the quantity, the number will decrease significantly. ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो मर जाएंगे, they will become extinct from the face of the earth, or else they would become negligible and confined to only one small area or domain. ठीक है, तो ये सारी की सारी evidences are considered to be important in evolution. एक बार फिर से देख लेते हैं. पहली paleontological evidences है, that is fossils etc. दूसरी morphological and anatomical evidences है. तीसरी biogeographical evidences है. Fourth is biochemical evidences. Then the fifth one is embryological evidences, and the sixth one is evidences from the natural selection. Okay? Yes. I hope everyone is thorough with it. So पहली part में आइए, that is paleontological evidences. As you can see, ये सारी के सारी जो pictures दिख रहे हैं आपको, ये all are fossils. All of these are fossils. ठीक है? So paleontology is the study of fossils. ठीक है? Fossils are remnants of life forms around rocks, etc. ठीक है? Fossils are written documents of evolution. क्यों? Because इसमें आपको the age of that particular animal, then the conditions surrounding them, the climatic conditions, weather conditions, soil conditions, etc. ठीक है? Plus उनके जो relatives थे, मतलब organisms similar to them, उनमें क्या क्या features additional थे या changes थे, उसमें पता लगेगा. So many conditions can be answered by simply these evidences. That is fossils. ठीक है? तो paleontological के बाद देखिए morphological देखेंगे हम लोग. Now look into this paleontological evidences here. It shows the horse and the elephant's evolution. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो जो original horses थे, the original horses which you saw were the Eohippus. ठीक. Now the original horses that were present were the Eohippus. ठीक है, original horses. अब वो कैसे थे? छोटे छोटे थे, like this. ठीक है, the original horses were the Eohippus that were small in size like that of a goat. फिर धीरे धीरे they started to develop, evolve, and this is the modern horse which we term the equus. ये आपकी modern horse है, इसको हम लोग नाम देते हैं equus. equus. ठीक है. Now, what were the changes here? If you look at the Eohippus, उसकी जो limbs है, that is the forelimbs and hind limbs, उसकी bone की structure पार कीजिए, ये है. अब modern day horse जो है आपका equus, उसको मार कीजिए. You will find that यहाँ पे splinters develop हुए हैं, यहाँ पे splinters नहीं है, ये dactylar है.
Like our fingers in our hands, जैसे tactile है, वैसे यहाँ पे भी tactile है. That's why that is evolution. अब यहाँ देखो, the original form of elephant जो था pre-existing उस समय, that was the woolly mammoth. A woolly mammoth was the ancestors of the elephants. अब modern elephants, African elephants and the Asian elephants अगर आप देखेंगे, तो you'll find they resemble or show similarity to that of the woolly mammoth. ठीक है? Then the first flying bird, that is the Archaeopteryx. Now Archaeopteryx की जब fossil दिखी, so the first thing that will come into your mind is basically ये जो bird है, ये हमारी आज की bird से बहुत different है. Yes, क्यों? Simple ध्यान दो. If you look at the bird, Archaeopteryx in the fossil, you'll find their limbs and their legs along with their body structure ये ज्यादा closer है और related है किससे? The reptiles से. More closely related to the reptiles. ठीक है? अब reptile से connected है. Okay. They are closely related to reptiles. तो बर्ड्स के साथ इसकी रिजेम्बलेंस कम दिखती है, बट रेप्टाइल्स के साथ ज्यादा दिखती है. टू स्टडी फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री. ठीक है, तो हॉर्स इवोल्यूशन देख लिया हमने. स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक क्या है? बर्ड्स है एंड रेप्टाइल्स है. बर्ड्स है, रेप्टाइल्स. ठीक है, so Archaeopteryx is the connecting link between birds and reptiles. So we can say that the modern day birds have evolved from reptiles. Modern day birds have evolved from reptiles. ठीक है? Fine. Remember this? याद रहेगा? Okay. ठीक है. Fine. उसके बाद देखो, dinosaurs की fossils, they were also excavated, and as you can see, the आपका ये जो जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड वगैरह, movies on dinosaurs have been made. Yes, स्टीफन स्पीलबर्ग, भाई जो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी. तो क्वेश्चन इज, उनको भाई कैसे पता लगा कि डायनासोर ऐसे दिखते हैं? Because once they actually excavated the fossils from certain regions of Sahara, Mongolia, that is in Asia, ये जहाँ से ये लोग excavate इन्होंने किया हुआ है. So those excavations gave certain forms of structures of those particular dinosaurs, and by using them conceptually पूरी की पूरी skeleton को design कर दिया गया. So small evidences can result in such a big result or outcome. ठीक है? Fine. Okay. तो ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखिए आपने. Fine. अब देखो, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कैन आल्सो टेल अस अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड और टाइम स्केल by analyzing fossils in sedimentary rocks. ठीक है? The study showed that life forms varied over time, and certain life forms are restricted to certain geological time scales. ठीक है? So as you can see, from the earliest to the latest, आपकी सबके सब eras and periods on the geological time scale are here. ठीक है? बुझेला? Now this particular transition from the earliest to the current, ये transition ही evolution है. Okay, fine. Fine. तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हो गई. सो बेसिकली अगर देखा जाए या बोला जाए, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस व्हाट डू दे प्रूव? दे शो अस द इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है? उसके बाद
they showed us about what were the changes that happened. We also got the information about what was the climatic conditions or weather conditions during that period. ठीक है, वो सब information मिल गई. Along with it, geological time scale जो हमें theory करछे, उसके बारे में भी we got an idea कि what comes before and what comes later. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आपने सारी की सारी चीजें डेवलप कर डाली. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एविडेंसेस इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस. इसमें क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को मिला के वी आर कलेक्टिंग एविडेंसेस. ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. फाइन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. नाउ इसमें दो चीजें आती है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू आवर नीट एग्जामिनेशन. ठीक है, नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोलॉजी एनालॉजी. ठीक है, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, होमोलॉजी एनालॉजी. ठीक है, फाइन. होमोलॉजी बेटा क्या है? यस, व्हाट एग्जैक्टली इज होमोलॉजी? होमोलॉजी बेसिकली implies this, where there are similar origin but different functions. Same origin with different functions is referred to as homology. ठीक है, so homologous organs and homology क्या है? The organs having fundamental similarity in structure and origin but different functions, they are referred to as homologous. ठीक है, फिर से बोलते हैं, if you'll observe that certain structures of organisms or organs have the same structure and origin but varies in its functions, it is referred to as homology. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? होमोलॉजी के एग्जांपल्स देख लो. सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन. जैसे एग्जांपल में देखिए, ह्यूमन हैंड है, वेल्स फ्लिपर्स है, बैट की विंग्स है, चीता की फीट है, ऑल दीज. नाउ इफ यू लुक एट द पिक्चर हियर, मैन, चीता, व्हेल, बैट्स, इन सबके पास हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ द फोर लिम्स. वी आर टॉकिंग ऑफ द फोर लिम्स. ठीक है, यहां पे हमने किसे लिया? वी हैव टेकन द फोर लिम्स. वी हैव टेकन द फोर लिम्स. फाइन. अब फोर लिम्स ऑफ द मैन, जो हम लोग का हैंड कहलाता है, उसका काम क्या है? पकड़ना, ग्रास्पिंग और डू सम वर्क. ठीक है, whereas whales flippers are for swimming. ये क्या है? ये भी modified four limb है, इसका काम है swimming because they exist in water. Bats wings are also four limbs but function is to fly or glide. Cheetah's foot is useful for running only. ठीक है, फाइन. तो these were certain examples of homology, जिसमें आप चीज सिंपली याद रखिएगा, where you'll have the same origin but different functions. Homology is also seen in terms of heart and brain, etc. इसमें भी different kinds of appearances and structures आ गए, but the logic remains the same. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. होमोलॉजी इन केस ऑफ प्लांट्स देखो, बोगनविलिया में स्पाइन्स है, थॉर्न्स है. ठीक है, कैक्टस में भी है. फाइन. नाउ लुक एट दिस. थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स की बात अगर करें तो बोगनविलिया, कुकुरबिटा फैमिली, एटसेट्रा आर देयर. ठीक है, बट द थिंग इज थॉर्न की फंक्शनिंग अलग है, दैट इज प्रोटेक्शन, व्हेयरएज टेंड्रिल्स जो है दे आर यूजफुल फॉर क्लाइंबिंग. तो दोनों अलग चीजें हैं, बट देयर ओरिजिन
remains the same. That is the stem. Okay. Then comes, other examples में देखो. Origin of homologous organs is due to divergent evolution. So divergent evolution क्या है? Yes. Divergent evolution मतलब by looking at only one or two, ठीक है, we would be able to make statements on their adaptations, on their mechanisms, etc. ठीक है. So origin of homologous organs is due to divergent evolution. Divergent evolution, ठीक है. इसमें है क्या? Divergent evolution is the evolution by which related species become less similar to survive and adapt in different environmental conditions. बुझ पा लो रे? So basically homologous जहाँ पे रहता है वहां पे what kind of evolution it is there? It is divergent evolution. ठीक है? Remember this. Homologous का अर्थ है divergent evolution. Simply remember this. ठीक है. फिर आया आपका एनालॉगस. एनालॉगस में कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है, मतलब देयर मे बी डिफरेंट ओरिजिन और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हियर एंड बिकॉज ऑफ विच फाइन बिकॉज ऑफ विच दे माइट हैव डिफरेंट फंक्शंस. देखो यहाँ पे the organs having similar function but different structure and origin, this phenomenon is called analogy. ठीक है. Function is done but the structure and the origin are different. Clear? Next, analogy में उसके बाद क्या हो गया? Wings of insects, wings of birds. Wings of insects जो है chitin से बनी हुई है, origin है. Whereas wings of the, what you can say, birds are muscular in nature. ठीक है. Then come to the eyes. ठीक है. Eyes of octopus, retina from skin, and mammals retina from the embryonic brain. Fine. In both these conditions, ठीक है, you'll find that the eyes are also variable in their functionality, hence kept in the analogous form. ठीक है. उसके बाद देखिए एनालॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगी में फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स है. ठीक है. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. फाइन. ओके. देन स्वीट पोटैटो एंड नॉर्मल पोटैटो हो गया. बोथ एक ही काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, बट स्वीट पोटैटो इज डिफरेंट एंड द नॉर्मल पोटैटो दैट सोलर ट्यूबरस इज डिफरेंट. ठीक है. दोनों अलग अलग हैं. But both of them produce are helpful for storage of food. ठीक है. So basically the sweet potato is a form of adventitious root, whereas the Solanum tuberosum, that is potato, is a normal one. ठीक है. Now look into it. Trachea of insects and the trachea of the humans. ठीक है. So trachea of insects for ectoderm and lungs origin from the mesoderm. As well as endoderm together. ठीक है. Trachea of insects originate from the ectoderm, whereas the lungs etc. originate from the meso and the endoderm. तो origin अलग अलग है, but purpose क्या है? Same है. That is transportation of the air. ठीक है. So the origin of analogous organs is due to convergent evolution. Analogous organ structures ମାନଙ୍କର convergent ଅଛି. Homologous ମାନଙ୍କର divergent ଅଛି. Why divergent? क्योंकि सेम ओरिजिन है, सिंगुलर ओरिजिन है, किंतु functions have become different as per the requirements, hence divergent evolution. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? Although same, different structures वगैरह थे, but now
these structures would be basically having similar kinds of functions. तो अलग origins के हैं लेकिन have the same common functions, hence known as convergent evolution. ठीक है? So convergent evolution is the evolution by which unrelated species become more similar to survive and have adapt in similar environmental conditions. ठीक है? So examples में अगर आप देखिए fish, land reptile and land mammals are unrelated, but they have to be more similar forms. Now, biochemical evidences क्या हो गए? As I've told you already, the DNA and the RNA were after that formed. ठीक है? So DNA से mRNA बना, mRNA से tRNA, mRNA से प्रोटीन बनेगा. Now, ये जो DNA it undergoes replication, fine. Then the from DNA to RNA, it is basically transcription using the enzyme transcriptase, and the last one is the proteins or polypeptides. Okay. So organisms show similar properties in terms of proteins, genes, other bio molecules, etc. It indicates common ancestry. It indicates common ancestry. सिद्धि भाई इनको कन्वर्जन बोला गया क्यों? आरंभ थे सतल समझे पूरा एकदम एकाठी थे. But later on, as the time passed, it became farther apart. That is divergent. ठीक है? You can look at the examples here. काहे the examples of ध्यान दिया उची because these basically are very very important ones. तो एक particular चीज में बहुत सारी चीज चली आएंगी. Fine. That's why it's very easy to actually note and important to remember. Okay. So biogeographical evolution, or also known as the adaptive radiation, etc. देखो, adaptive radiation, that is evolution by adaptation, is the evolution of different species in a geographical area starting from a point. Clear? Darwin's ventures in Galapagos Islands is a solid evidence that the adaptive radiation has already occurred. ठीक है? Okay. Then comes the marsupials, etc. तो ये भी divergent evolution है because गोटिए point of origin हो ये दूसरे की तरफ spread हो रहा है. Hence it is referred to as adaptive radiation. ये adaptive radiation जो है, it is a proof of biogeographical evidences. Biogeographical evidences. ठीक है? Then placental mammals in Australia. Now basically, in case of the Australian subcontinent, we have the marsupials. इनमें difference क्या है? They have developed a form of pouch-like structure जो कि उनके रहता है the abdominal section. So once the eggs are laid inside, ठीक है, fertilization है गला. After fertilization, these will come and stay or remain in the marsupium, and once they are matured enough, they will start to come out. ठीक है? So that is basically difference between placental mammals and the marsupials. ठीक है? Now look into this comparison. ठीक? When more than one adaptive radiation is appearing in a singular organization, ठीक है? आप ये देखोगे, when more than one adaptive radiation has appeared, could tell you one or more बोलते हैं ना, एक ही नहीं है, that will be incorrect. ठीक है? क्या हो गया देखो? When more than one adaptive radiation is appearing in a particular structure, ठीक है? Then it is referred to as isolated geographical area. It results in formation of convergent evolution. तो यदि अधिक थोड़ा पाई की आपकी
no adaptive radiation होगी in one particular region, then it is referred to as the convergent evolution. कहेंगी dissimilar origin अच्छी, ठीक है, but similar function है, तो एक जगह पर आकर फंक्शन मिल जाते हैं, hence referred to as convergent evolution. एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, marsupials and placental mammals, both of them are independently considered as adaptive radiation. Then comes the embryological theory. According to Ernst Haeckel, who proposed this theory, that once in a particular lifespan during the pregnancy period, okay, if an ultrasound is done, okay, the visuals or graphics are actually seen. So in that scenario, आप क्या see, no? So Ernst Haeckel, what did he do? He observed that all vertebrate embryos have some common features. So, embryological development, whenever is happening, at some stage or point, you'll find that various organisms appear slightly different. Okay? Various, like, embryos, they develop differently. And at a certain spot or phase of that particular development, you'll find that the various embryos, let that be of a dog, a cat, a mouse, okay, any form of, no, will have a similar form of appearance. Okay? So all vertebrates embryos, including humans, develop vestigial gill slits. Okay? Vestigial gill slits दिखेगा just behind the head, but it is functional only if the fish and not found in other adult vertebrates. Okay? Fine. However, Carl Ernst von Baer actually disapproved of this particular phenomenon. उन्होंने क्या कहा? Rejected this proposal. He noted that embryos never pass to the adult stages of the other animals. ठीक है? Embryos once come out, fine. Embryos when they come out, they normally, ठीक है, resemble the young ones. But if you look at Carl Ernst von Baer, it also rejected the theory. ठीक है? Now, उसी evidences में second thing comes to the picture is known as the natural selection. अब natural selection क्या है? Fine, look into it. Natural selection मतलब adaptation by certain degree. Adaptation by certain degree. ठीक है? That is what is natural selection. Clear? Fine. Now, some examples which you'll find in natural selection are, एक तो आपने already देख लिया था, that is Darwin's finches, which said that with the course of evolution, these organisms will actually brought about various changes. ठीक है? See here. Some examples are given, like the industrial melanism. ठीक है? Development of resistant varieties in one organism. Fine. Age is inserted hierarchy. No, what happened is industrialism. Industrialism है क्या? What do you mean by it? Look into it. Basically, क्या गला that आरंभ और age before the industrial revolution has begun, there were moths as such. There were moths as such. ठीक है? So in that scenario, ये लोग आपका once the hydroelectricity was generated, what happened was, say condition रे normally आगुरे माने black थिले, fine. So whenever they are present on the surface, they were not easily detectable. किंतु
लेटर ऑन देखा गया दैट सर्टेन अदर पॉपुलेशन जो कि ब्लैक था, डार्क था, वो आपका ठीक है चेंज हो गया. फाइन. सो व्हाट हैपेंड हियर? सी, इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन the more white winged moths, ठीक है, and no, what you can say, uh, more white and winged moths, basically theta population गोटे रहिला जी adapt करि पाइला. ठीक है, that was basically the Bateson medullaria, ठीक है, कार्बोनिका, ठीक है, और कार्बोनेरिया. तो मेडुलारिया जो है वो उसमें से एक ले लिया, ठीक है, एंड देन after industrialization, more dark-winged moths were there, but wild जो है white horses वो rare थे. ठीक है, वो चला. Okay. And why did this happen actually? If you can see in this picture, तो moth जो है उसके अंदर है. Now, in the white background, the black would be visible, but in the dark and boundary, white will not be visible. ठीक है. तो फिर इन्होंने क्या किया? ये तो सूट है बाहर चीज, ठीक है, डार्क निकल के आ रहा है सूट. देन स्लोली इट विल स्टार्ट टू बी रिमूव्ड. ठीक है. So here देखो. Before industrialization, there was thick growth of white colored lichen covered the trees. In that background, the white-winged, moths survived, but the dark-colored moths were picked up by predators. ठीक है, क्यों? धौड़ा background है, खड़ा रही ले. Obviously ये होगा. So therefore, slowly they started adapting. Slowly they started to adapt. That is natural selection. अब natural selection जब इन्होंने किया, तो what did they observe? इन्होंने क्या observe किया? That after this particular exploration, you'll find that all the organisms are similar to each other. Fine. ठीक है. तो डार्क विंग, लाइट विंग, एनीथिंग, ऑल आर द सेम थिंग. तो ठीक है. तो ये हो गई बेसिकली आपकी नो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन तक खत्म. ये सेकेंड फेज खत्म हुआ. तो पहले थियरीज एट ओरिजिन देखा हमने, अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देख लिया हमने. नाउ यू टेल मी व्हेन दिस प्रॉब्लम वुड बी एक्चुअली सॉर्टेड आउट. फाइन. ठीक है. ओके. ठीक है. डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड हियर? अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, फटाफट पूछो. नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, जल्दी. I said 1 or 2 minutes pause and then we'll again continue. Okay. I hope everyone is clear that कोई डाउट तो है नहीं. चलो बढ़िया. The next thing is theories of biological evolution. Theories of biological evolution. ठीक है. Now, if you look at the theories of biological evolution, fine. तो ये biological evolution है क्या? Yes.
Basically, same things that you have learned till now, ये सारी की सारी चीजें, that is the evolution or development, if it occurs in living entities or no natural structures, then it will be very very helpful. ठीक है. अब देखो यहाँ पे the theories of biological evolution में हम basically 3 theories पे ध्यान देते हैं. एक लामार्कियन theory, एक डार्विनियन theory and एक डिवराइव theory. ठीक है. The theory of Lamarck और Lamarckism, ठीक है, also known as, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में आया हुआ है ऑलरेडी, इसमें ध्यान देना एक बार. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो पहला जो थियरी है, दैट इज थियरी ऑफ लमार्क और लामार्किज्म. ठीक है, दैट सेज दैट, it states that the inheritance of acquired characters would be present in it. So acquired characters inheritance karna is was suggested by the John Baptist de Lamarck. ठीक है. Then comes Darwinian theory और Darwinism बोलते हैं इसे. इसमें क्या हो गया? This is theory of natural selection. तो यहाँ पे inheritance of acquired characters was the Lamarckism. Then in case of Darwinian theory, it was theory of natural selection. And in case of Hugo de Vries, it was a case of mutation. Mutation. ठीक है. Fine. ये चीजें हो गई समझ में. लामार्किज्म हो गई, डार्विनिज्म हो गई, एंड फाइनली, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी भी हो गई. ओके. ओहो. फाइन. सो दीज वर द थियरीज. अब इसमें क्या हो गया देखो. सबसे पहली चीज जो है वो आपकी लामार्किज्म और द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है. व्हाट वाज इट बेसिकली? ये जो चीज थी, दैट इज लामार्किज्म, इट वाज प्रपोज्ड बाय लामार्क. ठीक है. इट सेज दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑकर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ठीक है. द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में क्या है चीजें देखो. Say for instance, a person is, say, a policeman, ठीक है, inspector, and suddenly what happens, ठीक है, uh, basically whenever you'll have say a swimmer है. Now swimmer has been swimming for a long part of his life. अब उसके जब बच्चे वगैरह हो जाते तो once you throw them directly into the water, will they be able to do it? No. Now question is, when you do not know that, how will you do it? ठीक है. So acquired characters are developed by use and disuse of organs. Fine. तो जो चीजें आपकी ज्यादा जरूरत में आई वो बढ़ गई साइज में, and those which could not come into the light were rejected or removed. ठीक है. Then evolution of use of organs. देखो ध्यान से. Long neck जिराफ का. ठीक है. Elongation of forearm वगैरह वगैरह. Next thing that you'll see is the what you can say, जो ये organs हमारे ज्यादा use होते हैं, they become more developed. जैसे for example wrestler है, wrestler will use his arms and shoulders longer. ठीक है. तो वो ज्यादा developed हो जाते हैं. Fine. Similarly, evolution or by disuse. So those organs or structures that are not evolved or developed, then it is referred to as, ठीक है, then it is referred to as disuse. Okay. So evolution by disuse में क्या हो गया? Disappearance of limbs in snakes. Snakes don't have limbs, they are limbless.
Okay. Although evidence अच्छी ना करो, like in case of boa and anaconda or python, कि तांकर hind limbs are present in vestigial state. ठीक है? In human beings, you can take examples. For example, the nictitating membrane in the eye, the vermiform appendix. तो एगुड़िका मध्य हमारा यूज लागू थिला, ठीक है, जब हम लोग aquatic and terrestrial forms में थे respectively. In that scenario, तो वही चीज है, use and disuse of organs. Use is basically, the what you can say, uh, continuous and more effort जिसमें दिया गया, ठीक है. And disuse मतलब which is left alone without anything, that is disuse, ठीक है. Okay. So this theory was eliminated out because it is proved that the characters are inherited only through genes. So, मतलब बाप पुलिस वाला, पिताजी, father is a policeman or father is a doctor, and the son would also become a doctor. Incorrect, may or may not be. Similarly, one particular thing does this, and the others would be doing the same thing. ये जो चीजें हैं आपकी, ठीक है, that was very, very informative. Why? Because simplest thing is कि Lamarckism जो है, it is only applicable to the current situation. But later on, when the characters would be limited, ठीक है, then it is possible. But when the characters are too many, that means several, things are required. In that condition, it will have to understand those characters which are utilized or developed, they would not be, what you can say, uh, implemented afterwards. So immediately जिनसे उड़ी को है ही पारे, no है ही पारे. But through genes, when they get transferred, they may slowly develop या evolve. ठीक है जी, fine. So ये Lamarckism वाली theory हो गई. अब उसी को डार्विनियन थियरी नेचुरल सिलेक्शन क्या बोला, ठीक है. He said that with changes in the environment, the animals or organisms are able to adapt themselves with certain changes in their body. That is known as natural selection theory. ठीक है. सेम इंसर्टिंग को बाद में फिर ह्यूगो डिवराइस ने भी प्रूव कर डाला, ठीक है. ह्यूगो डिवराइस ने भी प्रूव कर डाला दैट, एक मिनट, that is mutation. So he said all these things are considered to be mutations that have occurred inside them, and through those mutations only the new organisms etc. are formed. Fine, ठीक है. Okay, तो ये आज का first phase of the things, that is theories of evolution, evidences of evolution, origin of life on earth, adaptive radiation, ठीक है, ये सब चीजें आजकल होती है. Therefore, it is very important for us to remember them. ठीक है, तो ये हो गया आपका. तो next part is human health and disease. Again a very interesting and important chapter. तो उस पे ध्यान दीजिएगा. It's very, very crucial. तो एक काम कीजिए, take a small break and come as soon as possible. Immediately आ जाओ so that we can start with it. Fine. जल्दी 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 जल्दी. Make it fast. चलो, thank you बच्चा लोग. Don't go away. Take a short break and come immediately for the next chapter. ये अगली chapter और important है. चलो, thank you.